Hello everyone, welcome to Concept and Fact of Life Sciences. Today in this video, we are going to discuss about the pollination. In our previous video, we have already discussed about the development of male and female gametophyte. Male gametophyte, जैसा अपने बात की थी कि we are having stamen. Stamen is made up of two things, anther and filament. Gynoecium, the unit of gynoecium, it is called as carpel, and the carpel it is having three parts: ovary, style, and stigma. Now, what is pollination? Pollination is the transfer of this pollen grain which develop within the anther. It is the transfer of this pollen grain from anther to the stigma of same species. Why same species? Because if there is a transfer of, suppose, the pollen grain of hibiscus to the stigma of calotropis, then it is not a pollination. The compatibility will not be there. So it should be transferred from anther to the stigma of same species, then it is known as pollination. Next अपन बात करें types of pollination. The pollination mainly are of two types. One is called as self-pollination, which is called as autogamy, while the other one is known as the cross-pollination, allogamy. So it is the self-pollination, also known as autogamy, while the allogamy it is called as cross-pollination. Simply. Now the self-pollination, it will promote the inbreeding depression. There is a term which is called as inbreeding depression. ये टर्म है आपकी जो ब्रीडिंग है, प्लांट ब्रीडिंग उसकी, दैट इज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. होता क्या है, इफ द F1 generation it is less superior than the parental generation, then the condition is called as inbreeding depression, and this autogamy or the self pollination it will promotes the inbreeding depression. So अपने को क्या चाहिए, अगर अपने को superior F1 generation चाहिए, we should have to promote the cross pollination. In crossing there is another term which is called as heterosis. There is heterosis. Heterosis means if the F1 generation it is superior than the parental generation, the condition is called as heterosis, and the allogamy or the cross pollination it will promotes the heterosis. So अपने को भी चाहिए कि cross pollination plants में ज़्यादा हो. Now we are having some factor that promotes the self pollination. We are also having the factor which promotes the cross pollination. एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं. शुरुआत करते हैं अपन that factors which promotes the self pollination. First condition is called as the monocliny. Monocliny means if you are having the bisexual flower, means both of the sex organ, that is the male and the female, if they remain present on the same flower, then it will promote the self pollination, and the condition is called as monocliny. So the monocliny it will promote the self pollination because the flowers they are bisexual. Next is the homogamy. Homogamy, gametes, means if there is a maturation of male and the female sex organ at the same time, अगर दोनों का जो maturation है एक ही टाइम पर होता है, then it will again promotes the self pollination as found in case of Mirabilis jalapa and Catharanthus roseus. Next condition is called as the cleistogamy. The another term which utilized over here is the chasmogamy. So there is cleistogamous flower and there is chasmogamous flower. Cleistogamous means the flower which never opens, जो flower open नहीं होते, definite है, self pollination ही होगा उसमें, and the flower which opens normally they are called as chasmogamous flower. Like found in case of Commelina and Viola, these plants they are having both of these conditions. The above ground flowers they opens normally, and these flowers they are the chasmogamous flower, while the below ground flower, although they have ability to open normally, but they are
present underground at underground condition, therefore they are not going to open. So these flower, they are the clistogamous flower, and if the plant it is having both chasmogamous as well as the clistogamous flower, then the condition is called as the amphicarpy. So जो नॉर्मली ओपन नहीं होते हैं क्लिस्टोगेमी, नॉर्मल ओपन होता है चैस्मोगेमी, और दोनों कंडीशंस अगर एक ही प्लांट पे अवेलेबल है देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज एम्फीकार्पी. सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं एंड कंडीशंस है दैट प्रमोट्स द सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट वन इज द एलोगैमी और द क्रॉस पॉलिनेशन. टू टाइप्स का हो सकता है, एक को अपन कहते हैं जिटेनोगैमी, अदर वन इज कॉल्ड एज द ज़ीनोगैमी. पहले बात करते हैं जिटेनोगैमी की. इफ वी आर हैविंग द मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन टू द सेम प्लांट इन डिफरेंट फ्लावर बट विद इन ऑन टू द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर है, अलग अलग फ्लावर्स के रूप में प्रेजेंट है, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज Geitonogamy, that will promotes the cross pollination. Like found in case of maize, you are having two types of flower. One is called as the silk flower, while the other is called as the tassel flower. Silk, it is a female flower, while the tassel, it is a male flower. If you are having both of these flower onto the same plant, then the condition is called as Geitonogamy. We are having the different flower onto the same plant. Now, next condition is the Xenogamy. We are having different male and the female plants. One plant having the male flower, other is having the female flower. Then the condition is called as Xenogamy. Both of these conditions, they promotes the cross pollination. जैसा आपने को पता है. Now, there are some factors which promotes the cross pollination in case of plant. First is the diclining. Here we already discussed about the monocliny. Now we are having the dicliny. Dicliny means if you are having the unisexual flower. If you are having unisexual flower, then it is called as dicliny, found in case of Carica papaya, जो पपीता है, and Phoenix dactylifera, जिसे अपन कहते हैं डेट पाम. यहाँ क्या होता है, आपको मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल होता है, मींस एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा एक प्लांट के ऊपर. नेक्स्ट इज द डाइकोगैमी. वहां थी होमोगैमी, यहाँ पे है डाइकोगैमी. डाइकोगैमी मींस इफ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दे मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम. अलग अलग समय पर अगर वो मैच्योर होते हैं तो कंडीशन कहलाती है डाइकोगैमी. डाइकोगैमी दो तरीके की हो सकती है, सिंपल है. फर्स्ट इज द प्रोटोएंड्री. इफ द एंड्रोइशियम मैच्योर्स प्रायर देन द गाइनोशियम, यदि जो आपका पुंकेसर है वो पहले डेवलप हो जाता है, दैट इज फाउंड इन केस ऑफ सनफ्लावर एंड कॉटन. दूसरी कंडीशन है प्रोटोगाइनी, व्हेन द गाइनोशियम इट मैच्योर्स प्रायर देन द एंड्रोइशियम, फाउंड इन केस ऑफ फिकस. बात करेंगे इसके बारे में. नेक्स्ट इज द हर्कोगैमी. नाउ इफ देयर इज ए फिजिकल बैरियर दैट प्रमोट्स द क्रॉस पॉलिनेशन, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज द हर्कोगैमी. Found in case of Calotropis and Pergularia, where you can observe the presence of pollen grain in the form of cluster, that is called as pollinia. So, if there is a physical barrier which promotes the crossing, then it is called as hercogamy. Next condition is the heteromorphy, like the morphological differences that promotes the cross pollination, found in case of primula. In primula, you are having two different type of flowers. One is called as pin flower, that is having the long style. Due to the long style, the placement of the stigma, it is on very much high or above, that do not allows the self pollination. Next is the thumb flower, which is having the short style. So these conditions, they again promotes the cross pollination, and the condition is called as heteromorphy, observed in case of primula. So these are this is all about the types of pollination. Next अपन बात करते हैं the agents of pollination. अब pollination के लिए agent, self pollination के लिए आपको कोई agents required है नहीं, but the cross pollination for to transfer we can say if it is on the same
plant or on the different plant, you have to have certain vectors or the pollinating agents. So there are agents of pollination. They can be divided into two broad classes. One is called the abiotic agents, other is called as the biotic agents. If we talk about the abiotic agents, abiotic means ajaivic. So first condition is the anemophily. If there is a pollination through the wind or through the air, like found in case of most of the gymnosperms, they are anemophilous. The pollination, that is the transfer of pollen grain from anther to the stigma, it is through the air current, then it is called as anemophily. Next is the hydrophily. If there is a transfer of this pollen grain through the water current to the stigma, then the condition is called as the hydrophily. Hydrophily, it is of two types. One is called as epihydrophily, other is called as hypohydrophily. If the pollination it occurs on the water surface, है ना, वाटर की सरफेस पे अगर आपका पॉलिनेशन होता है, then it is called as epihydrophily found in case of Vallisneria. If the pollination occurs below the water surface, that is found in case of Ceratophyllum and Zostera, then it is called as hypohydrophily. यानी जल की सतह पर और सतह के नीचे, सतह पर हो रहा है तो एपी और सतह के नीचे हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोफिली. नेक्स्ट इट इज द बायोटिक एजेंट्स, कुछ जैविक एजेंट कारक जो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाए. और सबसे पहले जैविक कारक आते हैं इंसेक्ट, और इन इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को टर्म यूज करते हैं अपन एंटेमोफिली. ठीक है. सो entomology is the study of insect, and the entomophily, it is a pollination through the insect. So we are having different type of mechanism of this entomophily. First is called as the liver trap mechanism, which is found in case of salvia. In salvia we are having the flower which is where there is a presence of a bi-lipped corolla. जो रेड से अपन शो कर रहे हैं, there is a bi-lipped corolla and dimorphic anther. One is the fertile anther, other is the sterile anther, and there is a presence of a closed stigma, because the condition which observed over here, it is called as protoandry condition, जहां पे जो एंड्रोइशियम है it matures prior than the gynoecium. ऊपर वाला एंथर फर्टाइल है, नीचे स्टेराइल है. जो इंसेक्ट है, if it sits on this sterile anther, it will act like a lever. जो ऊपर वाला फर्टाइल एंथर है, ये आकर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसकी डस्टिंग कर देता है इंसेक्ट के ऊपर. And when this insect it will visit another flower which is having the mature stigma, then it will carry out the pollination. So this type of pollination, the mechanism is called as liver trap mechanism, found in case of salvia. Condition over here is the protoandry condition. Now next is the trap door mechanism. Here the condition which is observed, it is called as Autogamy, which means the stigma or gynoecium it matures prior to the anther. होता क्या है? It is found in case of ficus, and in ficus, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा भी था, we are having the protogamy condition in ficus. Now in case of ficus, you are having a characteristic inflorescence. That inflorescence is called as hypanthodium. And there is a symbiosis of an insect which is called as, or we can say it is a wasp, which is also called as the fig wasp, which belongs to the blastophaga. Yes. So there is a insect or wasp that is called as fig wasp or the blastophaga. So whenever this blastophaga, if there is a presence of a mature fertilized, ना, mature है and it is fertilized, mature fertilized
blastophaga wasp, it enters into this characteristic type of inflorescence through a opening which is called as ostiole. Ostiole के थ्रू जो वास्प है, फिग वास्प है, फर्टिलाइज्ड है, मैच्योर है, इट विल एंटर्स इनटू द इन्फ्लोरेसेंस थ्रू द ऑस्टियोल। और जब इसमें वो व्हेन ही ट्राइड टू एंटर थ्रू दिस ऑस्टियोल, वो अपने जो विंग्स वगैरह है वो सब टूट फूट जाते हैं एंड इट विल एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर रीजन। नाउ द कंडीशन ओवर हियर, इट इज द प्रोटोगाइनी। जो मेल फ्लावर है जो ऑस्टियोल के पास में ही लगे हुए हैं, वो अभी तक मैच्योर, एंथर अभी तक मैच्योर हुए नहीं है, एंड बट द स्टिग्मा इट इज फुली मैच्योर। तो यहां पे ये जो आपका इंसेक्ट है ये एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद में इसके साथ में जो ये एंथर लेके आया है व्हेन विजिटिंग टू द अनदर फ्लावर, तो वहां से भी बात करेंगे किस तरीके से। तो वो एंथर यहां पे स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर देगा एंड देन देयर इज ए, वी कैन से, देन इट विल कैरी आउट द पॉलिनेशन ओवर हियर। अब क्योंकि अपन ने बात की एंट्री लेते वक्त जो विंग्स वगैरह हैं वो सब टूट चुके हैं इंसेक्ट के, सो इट इज नॉट एबल टू वी कैन से लीव दिस पर्टिकुलर इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस के अंदर ही रहेगा। इट इज ए मैच्योर फर्टिलाइज्ड फीमेल जो भी थी वास्प, मैच्योर थी, फर्टिलाइज थी। अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन यहीं पे डेवलप होगी। डेवलप होने के बाद में जब लार्वा स्टेज से वापस इंसेक्ट बनेगा एंड व्हेन इट विल लीव दिस पर्टिकुलर फ्लावर, इट विल अगेन टेक द pollen grain from the male flower which remain present near to the ostiole। और जब ये नेक्स्ट फ्लावर को विजिट करेंगे, अगेन इट इज ए मैच्योर फर्टिलाइज्ड वास्प जो एंटर करेगा ऑस्टियोल के थ्रू उस फ्लावर के अंदर। कंडीशन प्रोटोगाइनी है, एंथर मैच्योर हुए नहीं है, अंदर एंटर करेगा, देन देयर इज ए क्रॉस पॉलिनेशन। सो इस तरीके से कुछ आपको सिम्बायोसिस देखने को मिलता है बिटवीन द वास्प ब्लास्टोफेगा एंड द फिकस ट्री, जहां पे अपन कहते हैं कंडीशन जो है इन्फ्लोरेसेंस जो है हाइपेंथोडियम कहलाता है। सो दिस कंडीशन इट अगेन प्रमोट्स द क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज नोन एज ट्रैप डोर मैकेनिज्म। इंसेक्ट अंदर आ जाता है, अंदर आते वक्त उसको जो भी अपने विंग्स वगैरह वो सब खो देता है, जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही नेक्स्ट फेज में जाता है। मैच्योर फर्टिलाइज्ड है तो नेक्स्ट जनरेशन अंदर ही डेवलप होती है। जब नेक्स्ट जनरेशन लीव करती है हाइपेंथोडियम को, तो वो अपने साथ में क्या ले जाती है, पॉलन ग्रेन। और जब वो नेक्स्ट फ्लावर को विजिट करता है देन इट विल कैरी आउट द क्रॉस पॉलिनेशन। Similarly, the another condition is called as fly trap mechanism, which is found in case of Aristolochia. यहां पे क्या होता है, you are having a tube-like calyx that is called as the calyx tube. In calyx tube, you are having the inverted hairs over here. First condition, it is a vertical young flower, है ना? It is a vertical young flower. कंडीशन आपके पास फिर वही है, हाई स्टिग्मा तो रिसेप्टिव है बट एंथर इमेच्योर है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, प्रोटोगाइनी कंडीशन आ जाएगी। जो गाइनोशियम है वो पहले मैच्योर हो जाता है, इंसेक्ट एंटर कर जाता है, हेयर्स जो है इन्वर्टेड है, तो यहां तक तो आ गया, बट अब इसको लीव नहीं कर पाएगा। लीव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, अंदर ही ये रहेगा और जो अपने साथ में ये पॉलन ग्रेन लेकर के आया है, इट विल ट्रांसफर दिस पॉलन ग्रेन ऑनटू द स्टिग्मा एंड विल कैरी आउट द क्रॉस पॉलिनेशन। फिर क्या होगा, जो फ्लावर है वो ओल्ड होएगा, इट विल कम आउट इनटू द हॉरिजॉन्टल कंडीशन। अब जो हेयर्स हैं वो वेदर हो जाएंगे, उस तरीके का इन्वर्टेड कंडीशन अब इसमें नहीं है। एंथर मैच्योर हो चुका है। जो इंसेक्ट यहां पे था, इट विल टेक द पॉलन ग्रेन फ्रॉम दिस फ्लावर एंड इट इज नाउ एबल टू लीव दिस फ्लावर। व्हेन इट विजिट्स अनदर फ्लावर,
or we can say when it visits another flower, then it will carry out the cross pollination. So this mechanism, it is called as a fly trap mechanism. ऊपर जो फ्लाई था उसको पहले ट्रैप किया आपने, कंडीशन आपके पास में प्रोटोगाइनी थी, तो पॉलिनेशन हुआ वहां पे, एंथर बाद में मैच्योर हुए, जब एंथर मैच्योर हुए उस कंडीशन में फ्लावर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ गया, इट विल टेक द pollen grain, leave the flower, will carry out the pollination in another flower. So this mechanism is called as fly trap mechanism. So it is the another adaptation for Entomophily. Next type of biotic agents, they are the Ornithophily. Now simply Ornithophily, it is the pollination through the birds. अपन ने कुछ पॉलिनेशन की कंडीशंस पढ़ी थी यहाँ पे, यहाँ अपन ने देखा एनिमोफिली, जहां अपन कह रहे हैं कि विंड के थ्रू, हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू, एंटेमोफिली थ्रू द इंसेक्ट, एंड नाउ वी आर हैविंग द ऑर्निथोफिली व्हिच इज थ्रू द बायोटिक एजेंट व्हिच आर द बर्ड्स फाउंड इन केस ऑफ ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. नेक्स्ट इज द काइरेप्ट्रोफिली. काइरेप्ट्रोफिली, इट इज द पॉलिनेशन थ्रू द बैट्स, है ना, जो चमगादड़ हैं उनके थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे अपन कह रहे हैं काइरेप्ट्रोफिली, फाउंड इन केस ऑफ एंथोसिफेलस चाइनेंसिस, एडेंसोनिया एंड काइजिलिया. सो in these plants there is a pollination which occurs through the bats, that is called as काइरेप्ट्रोफिली. Next is the myrmecophily, है ना. Myrmecophily means the pollination which occurs through the ants and mites, है ना. इनके थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको अपन कहते हैं मर्मैकोफिली, फाउंड इन केस ऑफ प्रोसोपिस एंड अकेशिया. ये भी बायोटिक एजेंट है. नेक्स्ट इज द मेलेकोफिली, दैट इज द पॉलिनेशन व्हिच अकर्स थ्रू द स्नेल्स. घोंगे जो होते हैं उनके थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है, बायोटिक एजेंट है, कहलाता है मेलेकोफिली, फाउंड इन केस ऑफ लैमना व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज duckweed. So this is all about the pollinating agents and pollination. Next एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन. We are having question from previous RPSC assistant professor examination. The question is, which of the following is not a floral adaptation to prevent self pollination? इनमें से कौन सा फ्लोरल एडेप्टेशन नहीं है टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन? चलते हैं अपन, अभी पढ़ा है अपन ने कौन कौन से फ्लोरल एडेप्टेशन है. डाइक्लाइनी है, डाइकोगैमी है, हर्कोगैमी है और हेट्रोमॉर्फी है. दीज आर द फ्लोरल एडेप्टेशन टू प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन. बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे. डाइकोगैमी, बिल्कुल, द मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट डिफरेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द डाइकोगैमी. हर्कोगैमी अपन बात कर चुके हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की. डाइक्लाइनी, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिसेक्सुअलिटी. ये तीनों के तीनों प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को. सो द आंसर इट विल बी द पॉलीस्पर्मी, है ना. इट विल नॉट going to promote the cross pollination, while these three conditions they will promote the cross pollination. So this is all about the pollination. Thank you very much.